Yes, good evening, everybody, and welcome to second evening of the lecture for this year 2021. So already yesterday we have started with the chapter that is the name of our chapter is nothing but you can say here periodic table, model periodic table. And yesterday I already delivered the content what we are going to discuss here in this chapter. What is the content of this chapter and what we have to discuss here in the chapter. But basically, as I stated, in order to get this chapter well, आज थोड़ा सा साइड में काम चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस इन बिटवीन आएगा थोड़ा सा उसे देर कीजिएगा बिकॉज साइड बाय का साउंड थोड़ा सा आ रहा है सो just get a bit adjust with that part in between we'll get this sound. Okay, so as I stated, we are discussing modern periodic table, that is the classification of all the elements. There are 180 elements present here in this world, natural and artificial, and these elements are very well classified in this periodic table. This periodic table makes the foundation of total inorganic chemistry. As chemistry has three branches, three main branches: physical, organic, and inorganic chemistry. And this inorganic chemistry has a good weightage as far as JE or Neet is concerned. And total foundation of this inorganic chemistry is here in this chapter, periodic table. So those students who will be thorough with this periodic table, who will get this periodic table well, would be able to go through inorganic chemistry very easily or comfortably. So I expect that everyone amongst you will attend this chapter well, modern periodic table. In order to understand this periodic table well, we need to have the knowledge of this electronic configuration. So already yesterday I have started with this electronic configuration. What is this electronic configuration? That is what we have discussed over here. So already we have started with this. What is this electronic configuration? This is the fundamental part. This is not the part of chapter. Again and again I am stating, this is not part of the chapter. This fundamental part which is needed here in this chapter to understand all the concepts well, especially the classification well. And that's why we are discussing this. So electronic configuration is the distribution of electrons in shell, subcells, and orbital. Distribution of electrons in cells, subcells, and orbital is known as electronic configuration. So yesterday already I stated, we have seen one of the chapter which is very fundamental chapter, that is nothing but this, you can say, structure of an atom. So this is structure of atom where we can say this is the nucleus which is centrally situated in a highly dense area. And this nucleus consists of protons and neutrons. So protons, neutrons are present in the nucleus and hence they are called as nucleons. Whereas electrons revolves around this nucleus in a circular orbit, shells or subcells, and these electrons are here. So generally atom is made up of protons, neutrons, and electrons, and that's why they are called as fundamental particles of an atom. So once again, this protons, neutrons, electrons are called as fundamental particles of an atom. So we have here, we can say this is protons, then we can have neutrons, and we can have electrons. These are called as fundamental particles. Fundamental particles of an atom. Atom are fundamental particles. These are fundamental particles of an atom. Now, these are present in the nucleus and these are extraplanetary particles which revolves around this nucleus. अभी सवाल ये है कि protons, neutrons are present in the nucleus, but the structure of atom is a spherical, or throughout this sphere, throughout this total volume, these electrons are distributed. These electrons are distributed throughout the sphere of an atom. Now, what is the exact location of this electron? What is the exact location of electron? That's what we discuss. So we have to discuss the sphere of an atom, and in this sphere of atom, how these electrons are distributed. How many electrons are present in first cell, second cell, third cell, so onwards. Or there may be a subcells, there may be a orbitals. There are three different things. There are shells in an atom, there are subcells in the shells, and there are orbitals in cell, subcells, and orbitals. So how electrons are distributed? How many electrons are present in first shell? How many electrons are present in second cell? How many electrons are present in third cell? What is exactly path of that electron? This is decided by this electronic configuration. So electronic configuration is distribution of electrons in cells, subcells, and orbitals of an atom. So that is what we discussed. There are three different scientists who contributed here in this electronic configuration. For each and every atom, how this electronic configuration is there. So there are three different scientists. We are, you can say, above principle. Then we are here
Hans rule, Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle, yeah, Pauli's principle, you can say. And third one is nothing but Hans rule. So there are three scientists. There are three scientists who designed this electronic configuration. So number one scientist is above. The name of scientist is above. You may not be able to read my handwriting. It's already, I know it's very bad. Try to get it. What I have written, I'm telling you what I have written on the board. This is above principle. It's the name of scientist. So this is one of the scientists who contributed in electronic configuration. This is Pauli, name scientist. So this is Pauli's exclusion principle. This is the second scientist, and this is nothing but the Hunt's rule of maximum multiplicity. So above, Pauli, and Hunt's, these are three scientists who contributed in this electronic configuration. Above stated that is, you can say, electrons are filled. According to above, electrons are filled in cells, subcells, and orbital according to their increasing energy levels. See, these are the cells, and these cells are nothing but the energy levels. Every atom has shells. Every atom has cells. Number one, every atom has subcells. And number three, every atom has orbitals. So this is, you can say, this is shells. Cells are called as energy levels. Subcells are called as sub-energy levels. And orbitals are called as, you can say, orbitals. मतलब orientation we can say. इसके बारे में बताता हूँ. But these are the shells जो actually हम लोगों के atom के अंदर ऐसे दिखाई नहीं देते हैं. But वहाँ पे एक energy levels होते हैं. मतलब this is the shell which is nearest to nucleus has a lowest energy, and this is which is the farthest one from the nucleus has the highest energy. As we move away from the nucleus, energy of cells, subcells increases away from the nucleus. So energy of cells and subcells increases away from the nucleus. So the shell which is nearest to the nucleus has the lowest energy, and the shell which is farthest has the highest energy. So normally, how is this? आप देखिएगा कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, कॉलेज में भी है तो स्पोर्ट्स में जाते हैं. तो अगर हमें किसी बड़े ग्राउंड का चक्कर काटना है, हो सकता है कभी अपने स्कूल में पनिशमेंट लिया हो या फिर हमने कभी गेम्स एंजॉय किए होंगे. तो अगर हमारे स्कूल का बड़ा ग्राउंड है और हमें ग्राउंड में अगर चक्कर काटने के लिए बोला जाता है कि पीटी टीचर ने आपको बोला कि आपको ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं एज अ पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और अदर एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें पूरे ग्राउंड के चक्कर काटने बोले तो हम थोड़ा सा नजदीक से चक्कर काटते हैं, तो कम एनर्जी लगता है. और नजदीक से जितना दूर से चक्कर काटना है ग्राउंड का उतना एनर्जी ज्यादा लगेगा, जितना कम रेडियस होगा उतना एनर्जी कम लगेगा. समझ रहे आप लोग? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस रेडियस बहुत ज्यादा है, इसे रिवॉल्व होने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए. इसका कम है, इसका और कम है, इसका कम है, तो इसे बहुत कम एनर्जी लगेगा रिवॉल्व होने के लिए. सो इन दैट सेंस यू कैन से nearest shell has the lowest energy and farthest shell has the highest energy. So electronic configuration depends upon this one. Atom has shell, subcells and orbitals. Atom के अंदर shells होते हैं, shells के अंदर subcells होते हैं और subcells के अंदर orbitals होते हैं. Shells में क्या होते हैं? तो shells are nothing but the energy levels. Subcells energy levels के अंदर sub energy levels, मतलब subshells कहा जाता है. Orbitals उसी के अंदर present होते हैं. जिस तरीके पुणे बॉम्बे के लोग मानो किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में कहीं हो सकता है 2-4 बिल्डिंग्स हो, फिर उसके अंदर 2-3 फ्लोर हो, फिर उस फ्लोर के अंदर हमारा फ्लैट हो, उस फ्लैट के अंदर हमारा रूम है, लाइक दैट. तो हम किसी ना किसी रूम के अंदर रहते हैं, वो रूम किसी ना किसी फ्लैट का पार्ट होता है, फ्लैट किसी ना किसी बिल्डिंग का पार्ट होता है, बिल्डिंग किसी ना किसी सोसाइटी का पार्ट होता है. समझ रहे आप लोग? उसी तरीके से एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऑर्बिटल है, अपना एक पाथ है जिसके अंदर वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है. जैसे हम लोग अच्छी तरह जानते थे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. But Earth, when revolves around the sun, it has a particular path. It has a particular path. And that bit oval type of path you can see here. हम अच्छी तरह जानते हैं अच्छी तरह. It's not a circular one properly, है ना? So bit oval type of the orbit is there where Earth revolves, so orbiting around the sun. So जिस तरीके से अर्थ पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, कोई भी पाथ नहीं होता ना सन के अराउंड कहीं भी चला गया और रिवॉल्व होता है, बस रिवॉल्व होना है, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर पाथ है. उसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व होता है और उसका एक अपना पर्टिकुलर पाथ होता है, एंड दैट पाथ इज नथिंग बट द ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल होता है सबशेल के अंदर और सबशेल होता है शेल्स के अंदर, शेल होता है एटम के अंदर. सो इन दिस सेंस which electron is present in which orbital, which subshell and which shell, this is nothing but the electronic configuration. So these are the three scientists who has given
how electrons are distributed in cell, subcells, and orbitals. That is what we discuss here. Clear with this? So that is one of the important things. Now, तो above principle क्या कहता है? Above scientist ये कहता है कि these are the cells having lower energy, higher energy. Say suppose this is shell 1, 2, 3, and 4. They are numbered. Shells are numbered as 1, 2, 3, 4 away from the nucleus. So the shell which is nearest to the nucleus has numbered as 1, then 2, 3, 4. As we move away from the nucleus, that number goes on increasing, and that is the how shells are numbered. या फिर K, L, M, N. This number is also existing over here. That also we have studied in school. So that is also present. But these are the shells. So this has the lowest energy. This has the highest energy. According to above principle, the lowest energy orbital or lowest energy shell is filled first, followed by higher energy. So this is the first shell which has the lowest energy is filled first, followed by this one, then followed by this one, then followed by this one. इस तरीके से होता है. जैसे कि हम लोग तो ऐसा है हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो जनरली छोटे बच्चे पहले खाना खाते हैं, फिर बड़े लोग खाते हैं, फिर बड़े लोग लाइक दैट. इस तरीके से होता है. ठीक है. नॉर्मली अगर हम लोग सारे फैमिली साथ में खाते तो ये अलग बात होती है. दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर, नो डाउट एट ऑल. बट जनरली ऐसा भी होता है कि अगर प्रायोरिटी देने की बात आती है, बच्चों को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, लोअर एनर्जी वाले, फिर हायर एनर्जी, फिर हायर एनर्जी, बड़े सबसे बाद में खाते हैं. इस तरीके से हम लोग उसका सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. तो अबव इज द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट electrons are filled in shell, subcells, and orbital according to the increasing order of energy. The shell having the lowest energy is filled first, and the shell having the highest energy filled last one. So this is how you can say electrons are filled in this one. Second is Pauli's exclusion principle. So according to Pauli's exclusion principle, no any two electrons in an atom can have similar set of quantum numbers. Quantum number is one of the important terminology which is needed here in electronic computation. Atomic structure itself is proved or put forth by quantum mechanical model. That is proved by quantum mechanical model. हमने structure of atom में देखा है कि सबसे पहला atomic model हमारे सामने जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने रखा. फिर उसके बाद हमने आया कि रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. हमारे चैप्टर के हिसाब से देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु try to determine or define this electronic atomic structure. But out of that, what we have studied, there is J.J. Thomson is one amongst them. Then Rutherford is very notable scientist, one amongst them. Then Bohr, and then finally quantum mechanical. Whatever the structure of atom which is widely accepted throughout the world till that, that is nothing but you can say explained or supported by quantum mechanical model. Quantum mechanical एक theory है, जो quantum physics का quantum mechanics का एक part है. उस theory के हिसाब से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर जो पता ढूंढना है, इस पता ढूंढने के लिए उन्होंने क्वांटम नंबर्स दिए. एंड दिस इज नथिंग द क्वांटम नंबर्स. जिस तरीके से फॉर एग्जांपल से don't get confused with this quantum number. Just quantum number is the thing, is the concept which is needed to find out the electrons. Electrons को find out करने के लिए जरूरी है, nothing more than this. मानो आपका दोस्त आ रहा है, आप यहाँ पे मानो पुणे सिटी में है और आपका दोस्त कहीं बॉम्बे से आपके पास आ रहा है, तो आप उसको एड्रेस बता देते हो. यार पहली बार मानो आपका दोस्त आ रहा है आपके पास, तो आप उसे एड्रेस बता देंगे, यार तू आ जा. तो मानो कि तुम में से कोई यहाँ पे विमान नगर एरिया में अगर रहता है कोई, पुणे सिटी में विमान नगर में, तो आपका दोस्त जब बॉम्बे से आएगा तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप या तो रेलवे स्टेशन पे आएंगे, या तो प्लेन पे, या बस स्टॉप पे आएंगे. चलो मानो बंदा आपका बस से ट्रैवल कर रहा है, बस से आ जा रहा है, बस स्टैंड पे आ जाएगा, मानो शिवाजी नगर पे आ जाता है, तो आप बोलेंगे शिवाजी नगर आने के बाद दूसरा कोई तो पीएमटी का बस पकड़ लो और आप विमान नगर में आ जाओ. विमान नगर आपका एरिया है. विमान नगर में आने के बाद ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ये मेरा फ्लैट है. इस तरीके से मैं एड्रेस बताया, फिर उसके अंदर आपका नाम होता है. सो हमारा एड्रेस ये होता है कि हमारे घर का नाम, हमारा नाम, हमारे घर का नाम, फिर हमारे बिल्डिंग का नाम, हमारे एरिया का नाम, और फिर हमारे तालुका और डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम. इस तरीके से हमारा एड्रेस होता है. तो अगर आप परफेक्टली सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि आजा पुणे सिटी में मैं हूँ, आपका दोस्त आएगा कहाँ पे? पुणे सिटी इज नॉट द परफेक्ट एड्रेस. इट इज वन ऑफ द एड्रेस व्हिच टेल्स दैट यू आर इन पुणे सिटी, बट पुणे सिटी इज टू बिग. सो फॉर दैट वी नीड अगेन एरिया, पर्टिकुलर एरिया, कि इन पुणे सिटी स्टेज इन विमान नगर, फिर उसके अंदर भी वापस दिस इज बिल्डिंग, दिस इज सोसाइटी, फिर this flat, like that. इस तरीके से एड्रेस होता है. उसी तरीके से electrons is present, electron is present in an atom. कैसे ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन? There are many electrons. जैसे कि हम सोडियम की केस लेते हैं, तो सोडियम के केस में सोडियम has atomic number 11. मतलब this has 11 electrons. Okay, this 11 electrons. अभी सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? हाउ विल फाइंड आउट दैट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन?
एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो जैसे कि आपका भाई और आप दोनों एक साथ में रहते हैं, मानो आपका भाई और आप दोनों साथ में रहते हो, तो अगर आपके भाई के नाम से लेटर आता है, आपके नाम से लेटर आता है, बाकी एड्रेस तो सेम रहेगा, आपका नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, फ्लैट सेम रहेगा, बिल्डिंग सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, नाम बदलेगा, आपके भाई का नाम अलग है, आपका नाम अलग है, सो नाम बदलेगा। उसी तरीके से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, इसके अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स जो कि एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर का, ओके, उनके नाम भी है, मतलब दैट इज यू कैन से, मैं वो भी लिख देता हूं चाहे तो आपको। नंबर 1 इज यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहली बात है। दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज द कैन से स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीन क्वांटम नंबर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पता अगर हमें ढूंढना है तो वी हैव टू हैव दिस क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों चीजें पता है तो हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है, सो उसी तरीके से होता है। तो पॉली साइंटिस्ट का कहना है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के ये चारों सेम नहीं होते, कोई भी तीन सेम हो सकते हैं, फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट, फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट। जैसे कि आपका भाई और आप एक ही घर में रहते हो, आप दोनों का सारा एड्रेस सेम होगा लेकिन नाम तो डिफरेंट होगा, तो आपके भाई का लेटर भाई को मिलेगा, आपका लेटर आपको मिलेगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से देयर आर फोर things which are necessary to find out the exact location of electron in an atom. For any of the two electron, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंपेयर करते हैं तो इसमें से सारे के सारे चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होते, भले इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बट 11 इलेक्ट्रॉन्स में 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स के ये क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होते हैं। अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन के तीन सेम हो सकते हैं, फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट, फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन दैट पॉली वही बताता है। तो अबॉम ने क्या बताया था? अबॉम ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। और पॉली ने क्या बताया? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम नहीं होते हैं, मतलब शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और उसका स्पिन, मतलब ये जो है दैट इज नथिंग बट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट शेल, ये दिस इज नथिंग बट द सबशेल, दिस इज नथिंग बट यू कैन से ऑर्बिटल, एंड दिस इज नथिंग बट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों सेम नहीं हो सकते, तीन सेम हो सकते, दैट इज अकॉर्डिंग टू पॉइंट। एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम हंस की भाषा में कहना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं दैट यू कैन से orbitals having the same energy, orbitals having the same energy can have or can accommodate maximum two electrons, can have maximum two electrons. Any orbital can accommodate maximum two electrons. So that is what we can say. So according to this Hund's rule of maximum multiplicity, any orbital can have maximum two electrons. जैसे हम लोग टू व्हीलर पे चलते हैं तो रूल के हिसाब से दो लोग ही टू व्हीलर के ऊपर अलाउड होते हैं, तीसरा अलाउड नहीं होता, एक चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो होते हैं, तीसरा नॉट अलाउड ऑन द टू व्हीलर अकॉर्डिंग टू आरटीओ रूल्स। तो उसी तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज व्हाट ही स्टेटेड, दैट इज अकॉर्डिंग टू Hund's rule of maximum multiplicity. Clear with this? So that is what we can say. This is the electronic configuration. So electronic configuration के अंदर ये fundamental concepts है जो हमें understand करने हैं. Once again, what is electronic configuration? So electronic configuration is distribution of electrons in shell, subshells and orbitals in an atom. Spherical atom में shell, subshell और orbital में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. This has been determined by these three scientists: above principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity. Above gives electrons are filled according to the increasing energy level. Pauli stated no any two electrons can have similar value of all four quantum numbers, and according to Hund's rule, any orbital can accommodate maximum two electrons. As like a two-wheeler, RTO has allowed only 2% maximum. So in that sense, Hund's rule allowed only two electrons in any orbital. Well, I'm talking about orbital. Shell is a totally different concept. Subshell is a totally different concept. Orbital is a totally different concept. So अलग-अलग है. So and all these are present in an atom. So ये समझिए कि एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है. So this is what we can say, and this is nothing but you can say given by this quantum numbers according to quantum theory. तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये क्वांटम नंबर्स ने दिया है. क्वांटम नंबर एक थियरी है, क्वांटम थियरी एक थियरी है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रूव करता है अलग-अलग तरीके से, खास करके मैथमेटिकल तरीके से. एवरीथिंग इज प्रूव्ड बाय दिस क्वांटम थियरी.
most of the things are approved by this quantum theory. Not everything, we can't say everything because there are always some lacunas or there are some always loopholes which remains. Most of the time they remains, and that's why we can say most of the things are very well explained by this quantum theory. So all this electronic configuration is by quantum theory. Now, actually electronic configuration कैसे लिखेंगे हम लोग वो हमें discuss करना है. So let's now we'll discuss the actual electronic configuration. ये रहा conceptual part. Actually electronic configuration कैसे होता है, we'll see that. ठीक है. So देखिए, there is number one called as a principal quantum number. Principal quantum number, which is also called as a shell, and this shell is denoted by n. दूसरा, that is you can say azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number, which is called as a subcell, and this is denoted by L. L से दिखाया जाता है. तीसरा, magnetic quantum number, which is nothing but you can say orbital, which tells about the orbital, and that is nothing but M. M से notify किया जाता है. और fourth is nothing but the spin quantum number. Spin quantum number that indicates the spin of electrons. Actually, spin of electron, and the spin is nothing but given by S. S area is the spin of electron. That is what we can say. So अब देखिए, atom के अंदर shells होते हैं. This shell is nothing but the principal quantum number according to quantum theory. हम theoretical language में जिसे shells कहते हैं, these are nothing but the principal quantum number according to quantum theory. Principal quantum number मतलब shell मतलब principal quantum number. That is denoted by small n. Whereas shells के अंदर subshell दिखाई दिए. Scientists found that हर shells के अंदर सब जिस तरीके से flat के अंदर room होते हैं, 2 BHK, 3 BHK flat होता है. Flat के अंदर room होते हैं. So अगर ये flat है तो ये rooms है. तो ये शायद रूम के अंदर का बेड है, ऐसा कह सकते हैं. तो हम लोग शायद बेड के ऊपर सोते हैं, तो इस तरीके से तो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर रूम्स है, रूम्स के अंदर बेड या चेयर हम जहाँ पे बैठते हैं, लाइक दैट, उस तरीके से होता है. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द शेल, दैट इज डिनोटेड बाय n. azimuthal quantum number is nothing but the subshell, sub energy level, that is denoted by L. And magnetic quantum number is nothing but the orbital, which is nothing but the m, and this is the spin of electron. Actually, electron has the clockwise spin, anti-clockwise spin. This electron is present in orbital. This orbital is present in subshell. Subshell is present in shell, and that is present in atom. So atom के अंदर ये shell दिख रहा है. Shells के अंदर subshell होंगे. Subshell के अंदर orbital होंगे, जिसके अंदर actually electron होता है. This is nothing but the electronic configuration distribution of electrons. अभी ये जो shell subshell है, उनके numbers क्या होते हैं, नाम क्या होते हैं, हम देखते हैं. ठीक है. So हमें ये discuss करना है कि what or how they are. Okay, अब देखिए, this is electronic configuration हम discuss करें. So these shells are numbered as n. N is nothing but you can say 1, 2, 3, 4, 5. या पुराने language के हिसाब से देखते हैं तो you can say K, L, M, N, O, so onwards. ऐसा देखते हैं. So atom के अंदर के जो shells है, shells are denoted as n is equal to 1, 2, 3, 4 onwards. This is the nearest one and this is the farthest one. We can go ahead with this. Also called as K element. Nearest one is called as K, L, M, O. That is away from the nucleus. Then this is another azimuthal quantum that is called as subcell. Subcells are denoted as S, P, D, F, G, H. हमें चार बहुत होते हैं. Because हमारे पास आज की तारीख में only 118 elements. तो हमारे लिए चार बहुत ज्यादा होते हैं. तो हमें ज्यादा की जरूरत है नहीं. ठीक है. So in that sense, we can say SPDF. This is, you can say, electronic configuration. This is electronic configuration. Okay. So in that, what we can say, shells के अंदर subcells है. Subcells are denoted by L according to quantum theory, and they are denoted as SPDF subcells. तो atom के अंदर shells are numbered as 1, 2, 3, 4, 5 away from the nucleus, and उसके अंदर की जो subcells है, they are denoted as S,
P D F इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। आगे GH भी आता है लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उनका काउंट F तक सफिशिएंट होता है। उसके बाद उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। भाई किसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, मतलब उसके अंदर एक फार्मूला है, मैं दूंगा आपको, जिस फार्मूला से बता दें कि हर शेल्स के अंदर सबसेल्स है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव होते हैं, तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एस के अंदर एक्चुअली एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो अभी देखिए पहला शेल है, शेल्स के अंदर सबसेल है, सबसे अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल जिसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि कौन सा शेल है कौन सा सबसेल है, उसके हिसाब से वो मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा। सो दिस इज n, n is equal to 1, तो यहाँ पे n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, ऐसा ऐसा हम लोग शेल्स की बात करें। सो दीज आर शेल्स 1 2 3 4, भी हर शेल के अंदर क्या होगा, सबसेल होगा। तो इसके अंदर जो सबसेल होता है दैट इज कॉल्ड 1s, इसके अंदर जो सबसेल है उसे कहा जाता है 2s और 2p, इसके अंदर जो है वो यू कैन से 3s 3p और 3d, इसके अंदर जो है 4s 4p 4d एंड 4f, इसके अंदर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d एंड 6f। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब देखिए ये यहाँ तक का पार्ट अलग है, यहाँ तक का पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये सो दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, दिस इज डिफरेंट सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर मैं बता रहा हूँ कि हर एटम के अंदर शेल्स है जिन्हें n = 1 n = 2 n = कैसे कर सकते हैं, ये शेल्स है और ये शेल्स के अंदर के सबसेल्स है और वो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। अब देखिए दिस इज द फर्स्ट शेल, हम लोग इसकी बात करें, दिस इज द फर्स्ट शेल हैज ओनली फर्स्ट शेल एंड s नंबर का सबसेल, तो उसके अंदर एक ही होता है 1s नाम का सबसेल होता है, 1s नाम का सबसेल होता है। हम सेकंड की जब बात करते हैं सेकंड शेल्स की, सेकंड शेल्स के अंदर ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर दो सबसेल्स होते हैं, दो, उनका नाम होता है 2s एंड 2p। अभी 2s का मतलब होता है सेकंड शेल के अंदर का s नाम का सबसेल और इसका मतलब है सेकंड शेल के अंदर का p नाम का सबसेल। सो दैट्स व्हाई यू कैन से 2s सेकंड शेल के अंदर का s नाम का सबसेल और सेकंड शेल के अंदर p नाम का सबसेल, तो दोनों भी सेकंड शेल के अंदर है। 2 नंबर है यहाँ पे 2 है, 3 नंबर है यहाँ पे 3 है, 3s 3p 3d। तो इसका कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि थर्ड शेल के अंदर s नाम का सबसेल, थर्ड शेल के अंदर p नाम का सबसेल, थर्ड शेल के अंदर d नाम का सबसेल। और इसकी खासियत है जितने नंबर शेल्स होता है उतने ही सबसेल उसके अंदर आता है, उतने ही सबसेल इसके अंदर आते हैं। लेकिन हमारे 5f तक बहुत होता है, मतलब 5f तक सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा खत्म होता है। सो इन दैट सेंस फोर्थ के अंदर देखिए 4s 4p 4d 4f यहां तक आता है। इस तरीके से ये है हमारे शेल्स एंड सबसेल्स और उसके अंदर ऑर्बिटल आता है। अभी ये s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, लाइक इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अभी इसके अंदर एक होता है, इसके अंदर p होते हैं, तो ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है इसके अंदर, और जो जिसका मतलब एक ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है जीरो, उसका नाम जीरो है, मतलब उस ऑर्बिटल का नाम जीरो है। जैसे हम ऑर्बिटल का नाम s कह सकते हैं, सबसेल का नाम s कहते हैं, सबसेल का नाम p कहते हैं, वैसे ऑर्बिटल का नाम यहाँ पे जीरो है, बट एक ही ऑर्बिटल। इसके अंदर देखिए ये एक ऑर्बिटल और p के अंदर कितने होते हैं, 3, कुल मिला कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं सेकंड के अंदर। इसके अंदर कितने होंगे, इसका 1, इसके 3 4 और d के कितने होते हैं, 5 5 और 4 टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर, इसके अंदर 9 ऑर्बिटल्स होंगे। इसके अंदर कितने होते हैं देखिए 4s 1, ये p के 3 4 4 और ये 5 9 9 और ये 7, दैट इज यू कैन से 16 होता है, लाइक इस तरीके से होता है। अभी देखिए हम ये अच्छी तरह जानते हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले के अंदर 2 जो आपने देखा, इसके अंदर देखिए आप लोग 4 4 टू कितना होगा 8, 4 टू 8। इसके अंदर देखिए कितने 9 9 टू 18, हियर 16 टू 32, यहाँ पे 16 और जी के अंदर के अकॉर्डिंगली। सो दिस नंबर हैज गॉन अप टू 2 8 18 32 54 लाइक दैट, इट गोज अहेड अप टू 128 वगैरह, सो जितने हमारे पास है उतने, पर हमारे पास 118 एलिमेंट्स है तो उससे आगे जाएगा। इस तरीके से वो आगे चला जाता है, इस तरीके से आगे चला जाता है। तो इन दैट सेंस अब जो स्कूल में आपने जो स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 2 8 18 32 इज 10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट,
तो हम कह सकते हैं कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, 4 शेल्स के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है, उसके आगे 54 इलेक्ट्रॉन, सो ऑनवर्ड्स वो चलता है। नाउ थिंग इज दैट ये तो शेल है, लेकिन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स है ना, तो इसके अंदर एक ही सबसेल है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, उसके अंदर 4 है, सो ऑनवर्ड चलता है। तो शेल्स के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन व्हिच एक्चुअली occurs, इस तरीके से होता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सबसेल, दैट कैन बी गिवन, दैट कैन बी गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डायग्राम को वापस मैं एक बड़ा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। Okay, देखिए हम लोग, so we can say this is 1, so n is equal to 1, so here is 1s, so here is 2, that is n is equal to 2s 2p, n is equal to 3 3s 3p 3d, n is equal to 4 4s 4p 4d 4f, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7। 5 के अंदर क्या होगा, 5s 5p 5d और 5f, f तक सब हटा के दिए चाहते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। 6s 6p 6p 6d और 6f, 7s 7p 7d 7f, so you can have this electronic configuration। ये होता है। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का जो अबाव ने बताया था, अबाव प्रिंसिपल, अबाव ने बताया था कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, सो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में चला जाएगा, जैसे 1s पूरा भरा जाता है फिर 2s में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2s के बाद ये देखिए 2p 3s में, 3s के बाद इस तरीके से। सो दिस डायग्राम गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। सो दिस इज द सीक्वेंस, that is energy level, how electrons are filled in this orbitals, this diagram। So have a snapshot, screenshot of this one, or you can write this diagram has to be understood well। पहले के अंदर 1 है, दूसरे के अंदर 2 है, तीसरे के अंदर 3 है, फोर्थ के अंदर 4 है, 7s तक चलते हैं हम लोग। 7s के लिए जरूरी है हमारे 4f 5 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा खत्म हो जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी का सीक्वेंस देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, 1s के बाद वो 2s में चला जाएगा, 2s के बाद वो 2p में चला जाएगा, 2p के बाद वो 3s में जाएगा, 3s के बाद वो 3p में जाएगा, 3s के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाता है, 3d के बाद 4p आता है, 4p के बाद 5s आता है, सो ऑनवर्ड्स। अब देखिए इधर देखिए 3p और 3d, इनके बीच में 4s आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हमें लगता है कि 3p के बाद 3d आना चाहिए, ऐसा नहीं है, 3d के बाद 4s आता है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो 3p का एनर्जी कम है, 4s का ज्यादा है, लेकिन 3d का एनर्जी उससे भी ज्यादा है, सो 3d बाद में भरा जाएगा। दिस इज द वे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे 1s 2s 2ps 10, हाउ इट कम्स, इट इंडिकेट्स शेल्स एंड सबसेल्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। क्लियर विद दिस? सो हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस डायग्राम, टुमारो वी नीड दिस डायग्राम, ठीक है? So with the rest of the part, we'll meet tomorrow. Thank you very much. Till then, bye bye. Take a snapshot or screenshot, please, everyone.